English Diary presents active and passive voices. Active and passive voice are a very important topic in English grammar. English has now been an essential part of grammar that is active and passive voice. हम एक एक्टिव में सेंटेंस बनाते हैं, उसमें काम करने वाला सब्जेक्ट होता है, लेकिन जब हम पैसिव में सेंटेंस बनाते हैं उसमें ऑब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है, काम करने वाले यानी सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस कम हो जाती है, तो हम एक्टिव से सेंटेंस को पैसिव में ट्रांसफ़र करते हैं. इन एक्टिव वॉइस अ सेंटेंस एम्फसाइजेस सब्जेक्ट परफॉर्मिंग एन एक्शन, while in passive voice sentence emphasizes the action or the object of the sentence. एक्टिव वॉइस को उर्दू में फ़ेल लाजिम जुमले कहते हैं और पैसिव वॉइस को हम उर्दू में फ़ेल मुतअद्दी जुमले कहते हैं. फ़ेल लाजिम हम तब बनाते हैं जब हमारे पास डूअर ऑफ एन एक्शन यानी सब्जेक्ट मौजूद होता है और वो काम कर रहा होता है. फ़ेल मुतअद्दी यानी पैसिव वॉइस हम तब बनाते हैं जब हमारे पास सब्जेक्ट ना हो या उसकी इम्पॉर्टेंस कम हो या ऑब्जेक्ट की इम्पॉर्टेंस ज़्यादा हो या हमारे दरमियान काम की अहमियत हो, तब हम एक्टिव से सेंटेंस को पैसिव में बनाते हैं. To know how a sentence is converted in passive voice from active voice, we need to go through certain rules with example based on it. हम कैसे एक्टिव वॉइस से सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए हमें कुछ उसूल जानने ज़रूरी हैं, कुछ एग्जांपल्स जानना ज़रूरी हैं और प्रैक्टिस करना ज़रूरी है. अगर हम इन रूल्स को प्रॉपरली फॉलो करेंगे सो वी कैन मेक sentences in passive voice properly and we can convert sentences from active to passive voice. Now look at these rules. Now one more question is that why passive voice is made in English? आखिर हम पैसिव वॉइस क्यों बनाते हैं जब हमारे पास एक्टिव वॉइस में सेंटेंसेस बनाने के लिए ऑलरेडी बहुत सारे टेंसेस हैं, स्ट्रक्चर्स हैं. सो व्हाई डू वी नीड अ पैसिव वॉइस? So the answer is we need to change active to passive whenever the importance of subject in the sentence decreases और importance of the recipient object of the work increases. हम उस वक्त एक्टिव से पैसिव में जुमले बनाते हैं जब हमारे पास काम करने वाले की अहमियत कम हो जाती है, सब्जेक्ट की अहमियत कम हो जाती है या काम मौसूल करने वाले यानी ऑब्जेक्ट की अहमियत सेंटेंस में बढ़ जाती है. सो वी नीड टू चेंज एक्टिव फ्रॉम active sentence to passive. Now second rule is that even when we don't know who is a doer of an action subject in a sentence, we make sentences in the passive voice. या तो हमें मालूम ना हो कि काम किसने किया है, सब्जेक्ट का इल्म ही ना हो हमें, तो हम सेंटेंस पैसिव में बनाते हैं. And when we want to hide the person subject in the sentence or not want to reveal the doer of an action, we value the receiver or object in sentence. या समटाइम हम ये करते हैं कि हम काम करने वाले को मेंशन नहीं करना चाहते, सब्जेक्ट को मेंशन नहीं करना चाहते और हम ऑब्जेक्ट को बताना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस पे एम्फेसाइज करना चाहते हैं, तो हम एक्टिव से सेंटेंस को पैसिव में ट्रांसफ़र करते हैं. एक्टिव एंड पैसिव वॉइस रूल फॉर ऑल सेंटेंसेस, ऑल टेंसेस. तमाम टेंसेस के लिए एक्टिव और पैसिव के कुछ रूल्स हैं जो कि सेम हैं. वो रूल्स क्या हैं? लेट लुक एट दीज. फॉर मेकिंग पैसिव वॉइस वी मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव इन द सेंटेंस. विदाउट द ऑब्जेक्ट द पैसिव वॉइस इज नॉट पॉसिबल. पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपके पास सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है, ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है जो कि एक्शन रिसीव करता है. अगर आपके पास जुमले में ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होगा तो आप एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस नहीं ट्रांसफ़र कर सकते, नहीं बना सकते. The second rule of making passive voice is object of active sentence become the subject of passive sentence. जब आपका एक्टिव सेंटेंस में जो कि ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव सेंटेंस के अंदर आकर सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट की प्लेस पे आ जाएगा, और जो एक्टिव सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट होगा वो जब आप पैसिव बनाएंगे तो वो अपनी प्लेस चेंज करके ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा. यानी कि ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस एंड सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस. Now the third rule is that in passive voice after verb by is used to mention the object. जब आप पैसिव वॉइस में जुमला बनाते हैं या एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तब वर्ब के बाद हमें by यूज़ करना पड़ता है अपने ऑब्जेक्ट को मेंशन करने के लिए, बताने के लिए. And the fourth rule is that in passive voice always third form of the verb is used. पैसिव वॉइस के तमाम टेंसेस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी.
Now another rule is that how can we change our subject into objects when we are going to make sentences in passive voice. So if we have a subject in active sentence I, so it becomes me in passive sentence. We changes into us, you changes into you, he changes into him, she changes into her, it into it, and they become them. Now, what are the formulas? How can we make sentences in active to passive voice? There are some specific formulas for changing active to passive voice. जब हम active voice से passive voice में अपना sentence change करते हैं तो हमारे पास कुछ particular formulas हैं, structures हैं जो हमें use करने पड़ते हैं. So for present simple के लिए आपके पास active का formula है affirmative का subject plus base form और first form of the verb and object. जब आप प्रेजेंट सिंपल टेंस को पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो आपका फॉर्मूला होता है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर. आपके हेल्पिंग वर्ब इज एम आर बन जाते हैं एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म. ऑलवेज रिमेंबर वी हैव टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ऑल द पैसिव वॉइस सेंटेंसेस. थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट. For making negative sentences in active voice, we have a formula subject plus do does not plus verb की first form and object. जब हम active से इसे passive में change करेंगे तो negative का formula होगा object plus is am are not plus verb की third form plus by and subject. Interrogative sentences के लिए active voice का formula है do does plus subject प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. पैसिव वॉइस में फॉर्मूला है इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय एंड प्लस सब्जेक्ट. नाउ लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल. हाउ कैन वी मेक पैसिव सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव सेंटेंसेस इन प्रेजेंट सिंपल टेंस. प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम एक्टिव से पैसिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज शी रीड्स एन इंग्लिश नॉवल. वो इंग्लिश नॉवल पढ़ती है. नाउ एन इंग्लिश नॉवल आवर ऑब्जेक्ट सो इट कम्स इन स्टार्ट इन पैसिव वॉइस. इंग्लिश नॉवल हमारा ऑब्जेक्ट है तो ये पैसिव वॉइस में स्टार्ट में आएगा. एन इंग्लिश नॉवल सिंगुलर है तो इज़ आ जाएगा. एन इंग्लिश नॉवल इज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड की थर्ड फॉर्म रेड. एन इंग्लिश नॉवल इज़ रेड बाय हर. शी जो सब्जेक्ट था जब वो ऑब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस में तो चेंजेस into her. An English novel is read by her. English novel पढ़ा जाता है उसके ज़रिए से. Now look at the second example. She doesn't bake a cake. वो केक नहीं बनाती. So now a cake is our object in active sentence और जब हम passive बनाएंगे तो हम इसे as a object जो है वो start में ले आएंगे. A cake is not negative है. डज नॉट की जगह सिंगुलर है. आ केक तो इज़ नॉट हो जाएगा. आ केक इज़ नॉट. बेक की थर्ड फॉर्म बेक्ड. आ केक इज़ नॉट बेक्ड बाय हर. शी चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट में और शी से बन जाएगा वो हर. आ केक इज़ नॉट बेक्ड बाय हर. केक नहीं बनाया जाता उसके ज़रिए से. तो यहाँ इस सेंटेंस में केक की इम्पॉर्टेंस है, केक बनाने वाले की इम्पॉर्टेंस ख़त्म हो चुकी है. दैट्स वाई वी हैव मेड इनटू पैसिव. द थर्ड एग्जाम्पल इज़ डू यू परचेज बुक्स. क्या तुम किताबें ख़रीदते हो. अब इस जुमले में काम करने वाले की अहमियत है, यू की इम्पॉर्टेंस है और हम उसी से पूछ रहे हैं. बट व्हेन वी हैव टू कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, हाउ कैन वी कन्वर्ट इट. आर बुक्स परचेज्ड बाय यू. क्या किताबें आपके ज़रिए से ख़रीदी जाती हैं. अब इस सेंटेंस में बुक्स की इम्पॉर्टेंस है इसलिए हम बुक को स्टार्ट में ले आए हैं एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. आर बुक्स परचेज्ड बाय यू. तो जब आपके ऑब्जेक्ट की इम्पॉर्टेंस बढ़ जाए या वर्ब की इम्पॉर्टेंस बन जाए देन यू हैव टू मेक सेंटेंस इन पैसिव वॉइस. दे प्लक फ्लावर्स. वो फूल तोड़ते हैं. इन दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट. वी एम्फेसिस ऑन सब्जेक्ट कि वो फूल तोड़ते हैं. बट इन पैसिव सेंटेंस फ्लावर्स आर प्लक्ड बाय दैम. इस सेंटेंस में फ्लावर्स की इम्पॉर्टेंट है कि फ्लावर्स तोड़े जाते हैं. That's why we have to make passive. Flowers are plucked by them. Look at another examples. She teaches all subjects. वो तमाम मज़मून पढ़ाती है. All subjects are taught by her.
तमाम मजमून उसके ज़रिए से पढ़ाए जाते हैं. In active sentence we have importance of a teacher she, but in passive sentence we have importance of subjects. I meet him every day. मैं उससे रोज़ मिलती हूँ. In passive sentence he is met by me every day. उससे रोज़ मिला जाता है. तो पैसिव सेंटेंस में मुलाकात की अहमियत है, इसलिए हमने एम्फेसिस किया है मिलने पर, एंड दैट्स वाई वी हैड टू मेड पैसिव सेंटेंस of that active sentence. Now look at some more examples of active voice and passive voice. Children read story books. बच्चे किताबें पढ़ते हैं कहानियों की. Story books are read by children. कहानियों की किताबें पढ़ी जाती हैं. Mom bakes a cake. A cake is baked by mom. I don't cook food. Food is not cooked by me. She doesn't wash clothes. Clothes are not washed by her. Do you eat an apple every day? क्या तुम रोज़ सेब खाते हो? Is an apple eaten by you every day? क्या रोज़ाना सेब खाया जाता है? Does he drive a car? क्या वो गाड़ी चलाता है? Is a car driven by him? क्या उसके ज़रिए से गाड़ी चलाई जाती है? So remember, when you are going to make sentences in passive voice, you must have a transitive object. You must have an importance of object in a sentence, or you have an importance of verb. That's why we are making sentences in passive voice. And when we are making sentences in passive voice, we have to use third form of the verb, and after the verb, by for mentioning the object. So this video is for the rules of passive sentences. How can we make sentences in passive voice, and how can we change sentences from active voice to passive voice. तो इस वीडियो में रूल्स डिस्कस किए गए हैं और प्रेजेंट सिंपल का एक्टिव टू पैसिव वॉइस कैसे बनता है वो डिस्कस किया गया है. आई होप कि आपको ये वीडियो क्लियर हुई होगी, आपका एक्टिव पैसिव का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा. इफ़ यू हैव एनी इशू, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स. So keep staying with us, keep connecting with us, and keep practice. Of course, when you keep practicing, so you learn better. Stay with us. Thanks for watching.